Hello everyone, a very warm welcome to the Hindu newspaper Analysis Townhall. Today is 25th October and we are going to cover the following articles from the Hindu newspaper. First one, Health Rights of India Children, where 25 children have died from the contaminated cough syrup. So here we will see what are the various bottlenecks in India in ensuring the health rights for children. Second, Supreme Court to hear the contempt plea in CGI incident where an attempt was made to throw the shoe at CGI. Third, RBI rules on banks exposure. RBI has basically come up with draft rules to limit banks exposure to capital market and also acquisition financing. We will see what are these. Mirage of port-led development in Nicobar. In the Great Nicobar project, a port is going to be developed. Now the article discusses about why the development of the port in that region will not be having that much positives which are being promised. Okay, what are the various issues and negatives of developing a port in that region? Fifth, Gyan Bharatam mission. We'll see what this is. Okay, so let's start. Yes, the context is the death of 25 children. The article basically starts with very sad thing. 25 children died because of the contaminated cough syrup. And it is alleged that the doctor who prescribed these got the commission of rupees 2.5, that is 2.5 rupee per cough syrup, that is 2.5 rupee per children's death. The article comparing this. It happened despite banning of certain cough syrup formulation by the health ministry. So the question arises, whose responsibility is this? What are the regulatory agencies doing? Okay, so all these issues we are going to have a look at. The first issue, weak regulatory oversight. In India, the drug regulation is basically who is doing the regulation by two agencies majorly. First one is Central Drug Standard Control Organization. ये क्या करता है? बेसिकली ओवरसीज लार्ज के जो मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट है, उन सब की रेगुलेशंस, वेदर द स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्शन, even the distribution, all these aspects are being looked by the CDSCO. Small जो मीडियम मैन्युफैक्चरर हैं, they are being looked after स्टेट ड्रग कंट्रोलर. अब दिक्कत ये है कि जो फेलियर हुआ है कोऑर्डिनेशन में इन दीज एजेंसीज की वजह से, उसकी वजह से अनसेफ मेडिसिन आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड, और प्रोड्यूस हो रही हैं तो देन द डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिंग इट एंड लीडिंग टू वेरियस इश्यूज लाइक डेथ इन दिस केस. Second, inadequate pediatric pharmacovigilance. What is this? Pediatric basically for children. Pharmacovigilance, चिल्ड्रन के जो हेल्थ राइट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग से रिलेटेड. ओके, इंडिया में देयर आर मल्टीपल लॉस रिलेटेड टू चिल्ड्रन, जहां पर कहीं 14 इयर्स ऑफ एज है चिल्ड्रन की, कहीं 16, कहीं 18, कहीं 21. ओके, अराउंड 13 पॉलिसीज एंड 10 लॉज आर देयर इन इंडिया रिलेटेड टू द child. Children से related there are so many laws. All these are basically focusing on labor, sexual exploitation and education, but there is not a single dedicated law on drug safety for children. Children are unique when it comes to drugs or medicines. What basically happens around the world is, even India में majorly यही होता है, जो drug की testing है, it is being done on adults. Various ethical reasons also. Children के ऊपर drug की testing नहीं होती है. So if it goes all right, so how this drug is going to be administered to children? इसकी एक reduced dosage, इसकी reduced dosage को basically children पे apply करते हैं, उनको prescribe किया जाता है. But the article says children are therapeutic orphans. Why? Because इनके लिए डेडिकेटेडली डेवलप ही नहीं होती है मेडिसिन. उनकी जो यूनिक फिजियोलॉजी है अंदर से, इट इज मेकिंग देम डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स. सो डूइंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल हैज वेरियस बेसिक इश्यूज. तो इसकी वजह से देयर इज अ इनएडिक्वेट पेडियाट्रिक फार्माकोविजिलेंस. चिल्ड्रन की हेल्थ के लिए, हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स को देखने के लिए देयर इज नॉट प्रॉपर दिस टेस्टिंग. देन एब्सेंस ऑफ चाइल्ड स्पेसिफिक ड्रग पॉलिसी. वर्ल्ड वाइड व्हाट इज द सिनेरियो? European Union has pediatric use marketing authorization. US has Best Pharmaceutical for Children Act. But India में there is no dedicated law, okay, for pediatric drug research. So India में it is absent. Fourth,
Poor implementation of essential medicine concept. What are essential medicine? Essential medicine are those which satisfy the priority healthcare needs of the population. मतलब एक population की जो priority care healthcare needs हैं, मतलब basic illness के लिए जो medicine होती हैं, उन medicines का एक्सेस, उनकी अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी, उसके लिए डब्ल्यूएचओ क्या करता है ना, एक एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को रिलीज करता है. ओके, इसमें चिल्ड्रन की भी रिलीज करता है कि चिल्ड्रन के लिए दीज मेडिसिन आर एसेंशियल. इंडिया इनको अपडेट करता है रेगुलर बेसिस पे, बट मेजरली फॉर अडल्ट्स, बट चिल्ड्रन के लिए इट डू नॉट periodically update the list. Okay, so this is one more issue. ओवर द काउंटर मिसयूज, ये इंडिया में बहुत ज्यादा है. ओके, बिकॉज इजी अवेलेबिलिटी होती है. कफ कोल्ड फीवर के लिए you go directly to the medical shop and just take the medicine. There is no need of prescription, no proper checkup or testing, especially in rural setting where the medicine shops are like every corner. Okay, so it leads to unsafe self medication. Okay, improper dosage, substandard substitute basically exacerbate this risk. So these are the various issues in ensuring health for the children in India. Okay, this is what the article discusses about. Now India has emerged as the pharmacy to the global south. ठीक है, अब last 3 years में WHO ने has issued various warnings, especially for the contaminated cough syrup. Despite this happened. Okay, so it becomes India's duty. Obviously, it becomes more and more, it is more important when you export it. Local consumption have, but at the same time, you are exporting it, especially to the global south. Okay, so it carries the responsibility to ensure the absolute safety of the medicine being exported. So all these issues need to be addressed. Next, Supreme Court to hear the contempt plea. Basically, we all are aware of the incident where advocate, let's not name it, when an advocate has tried to throw a shoe at the bench led by the CJI. Okay, so even the CJI has denied of any contempt case in this case, saying ki, okay, this is inconsequential, we should not give much focus to it. But what we are going to do today is, the incident is not important for us, but the constitutional legal provisions for contempt of court. What is contempt of court? First of all, any action that disrespect court's dignity. As simple as that. Okay, what you can do is, this is the disrespect of the court. Or one more thing you can do is not obey the order of the court. Okay, not obeying the order of the court. So any action that disrespect the court dignity or not obeying the court is contempt of court. Constitution, it has constitutional mandate also. Under Article 19(2), freedom of speech and expression है जो, we all know it is not absolute. It can be limited by certain grounds which have been given in the Article 19(2), and in these grounds, one ground is contempt of court is also being there. Okay, on the ground of contempt of court, freedom of speech and expression can be restricted. Then Supreme Court and High Court को power है. Article 129 Supreme Court, that is, it is a court of record. Basically, it can punish for its contempt. अगर Supreme Court का contempt होता है judges का और the court का, तो then Supreme Court has the power to punish it. Same is for the power for the High Court under Article 215. And for this, there is a dedicated law to operationalize this. Contempt of Court Act 1971, इसमें define किया गया है क्या contempt of court है, civil, criminal क्या है, what are the various punishments. There are two types of contempt of court, civil और criminal. Civil is basically what, कि the जो order है court का, you disobey it, you do not follow it. Okay, but criminal contempt में basically you try to lower the dignity or the authority of the court, जैसे इस केस में हुआ. Okay, so this is the scandalizing or lowering the authority, interfering with judicial proceeding, so it is criminal contempt. एक 2006 में amendment हुआ था इसमें. उसके बाद क्या हुआ कि अगर if something has been said against a judge or say court, if that is true and has been said in good faith, then that will act as a valid defense in cases of contempt. Okay, ऐसा नहीं है कि if you criticize a judge, okay, for a judgment for example, then contempt of court हो जाएगा आपके खिलाफ. It can be there, but if what has been said is true and done in good faith, then it will act as a valid defense if any contempt proceedings have been initiated against the person.
ओके, ये बेसिकली कॉलोनियल लेगेसी है विच वी आर कैरिंग। इसी क्रिटिसिज्म में बेसिकली क्या आएगा कि इंग्लैंड ने खुद इसको एबॉलिश कर दिया है। वन इज जजेस हैव बीन हाइपर सेंसिटिव रिगार्डिंग एनी क्रिटिसिज्म। ओके, सो इंग्लैंड से खुद ये खत्म हो चुका है। जुडिशियल ओवररीच, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, लैक ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी है ही नहीं, कोडिफाइड ही नहीं है। What is exactly contempt of court? It depends on the whims and fancies of the judges involved in the case. Okay, so these are the various criticisms of the contempt of court. This is what is required for the exam. Yes, this one. Let's do it. RBI लेके आया है regulations, like draft है अभी। तो उसमें क्या है, देखो, two things. One is capital market exposure. ठीक है। Second is acquisition financing. So these are risky things. Capital market fluctuates the shares, basically fluctuates, the prices go up and down. Okay, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है। सो बैंक के रिस्क को कम करने के लिए आरबीआई इज ट्राइंग टू लिमिट दीज टू एक्सपोजर्स। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, बेसिकली द लेंडिंग बाय द बैंक विच इज रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट। ओके। सेकेंड, एक्विजिशन फाइनेंसिंग क्या है, इफ अ फर्म ए इज गोइंग टू एक्वायर फर्म बी, एक्वायर करना है, उसके लिए इट नीड्स कैपिटल, तो इट विल गो टू बैंक कि भाई मुझे कैपिटल दे दो, आई विल बाय दिस कंपनी। सो इन दो के लिए गवर्नमेंट, आरबीआई हैज कम अप विद सर्टेन ड्राफ्ट रेगुलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो डायरेक्ट एक्सपोजर है कैपिटल मार्केट में और एक्विजिशन फाइनेंसिंग में 20% होगा मैक्सिमम। मतलब बैंक का टोटल अगर लैंडिंग 100 है तो उसका 20% ही इन दो चीजों में हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके। सेकेंड थिंग क्या है, इसमें जो टोटल है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मिला के ये 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। एंड एक्विजिशन फाइनेंसिंग कैन नॉट बी मोर देन 10%। मतलब टोटल भी है, total 20% for the direct only, 40% for direct and indirect, 10% for the acquisition financing। उस 10% में से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज लगेंगे ए को बी को बाय करने में, ठीक है, पर इसको एक्विजिशन हो रहा है। आउट ऑफ दिस हाउ मच बैंक कैन गिव, मैक्सिमम 70 रुपीज, ठीक है। मैक्सिमम 70% ऑफ द डील वैल्यू विद एटलीस्ट 30% टू बी फंडेड बाय द एक्वायरिंग कंपनी। 30% ए देगा कम से कम, ठीक है। और ये जो 20%, 30%, 40% है, विच कैपिटल, बैंक की मल्टीपल कैपिटल्स होती है, इट इज ऑफ द टीयर 1 कैपिटल। व्हाट इज टीयर 1 कैपिटल, ये बेसिकली बैंक की कोर कैपिटल है और इसका मेजर थिंग्स कहां से आती है, शेयर होल्डर्स से। ओके, व्हाट इट इंक्लूड्स, इट बेसिकली इंक्लूड्स दीज थिंग्स, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब जो बैंक की या किसी कॉर्पोरेट की एक साल में अर्निंग हुई वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद जो अर्निंग रिटेन की गई वो बैंक की कोर कैपिटल है, दैट इज द कोर कैपिटल ऑफ द बैंक। ओके, रिटेन अर्निंग, इक्विटी एंड सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन एब्जॉर्ब लॉसेस। सो ये टीयर 1 का दिस परसेंटेज इज गोइंग टू बी द लिमिट विच आरबीआई हैज प्रपोज्ड फॉर द बैंक्स। ओके, आरबीआई ने पास्ट में रूल्स को लिबरेट भी किया था। फॉर एग्जांपल जो कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल शेयर्स है मेरे पास, इसके अगेंस्ट मेरे को लोन लेना है। अर्लियर द लिमिट वाज 2 मिलियन, दैट इज 20 लाख रुपीस। नाउ दैट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 2 करोड़ रुपीस। सो शेयर्स के अगेंस्ट कितना, हाउ मच लोन आई कैन टेक, अप टू 2 करोड़। So these are the various guidelines or the draft rules by the RBI for limiting the exposure of banks to the capital market and acquisition financing. Yes, this article basically criticizes the port-led development in ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके अंदर क्या बनाएंगे हम, पोर्ट बनेगा, एक प्रॉपर सिटी भी बनेगी, मतलब छोटा एरिया है, ठीक है। ओके, एयरपोर्ट बनेगा। सो यहाँ पर हम पोर्ट की बात करेंगे, डेडिकेटेडली पोर्ट को डिस्कस किया गया है इसमें, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट इज दैट दिस फैसिलिटी, दिस पोर्ट will position India as a regional hub for maritime security and economic growth. Two arguments, security and economic growth. Okay, now what is going to be the impact on the indigenous communities and ecology, that has been ignored totally. Okay, so let us see what are the issues in this development of port. पहला, कमर्शियल रैशनल देखते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से।
क्या आर्ग्यूमेंट है? व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और से द प्रोपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इट विल मेक इंडिया रीजनल ट्रांसशिपमेंट हब. व्हाट इज ट्रांसशिपमेंट? ट्रांसशिपमेंट बेसिकली क्या है? फॉर एग्जांपल, दिस इज द पोर्ट. ओके, नाउ द बिग वेसल्स आर कमिंग, stopping at a particular port. At this port, they will be divided into small ships and small cargoes. Then they will be again redistributed. So this is the transshipment. Okay. So it will become transshipment hub. जो क्या करेगा? ट्रैफिक को कैप्चर करेगा. जो कहां से जा रही है? कोलंबो एंड सिंगापुर. बेसिकली कोलंबो एंड सिंगापुर आर द मेजर ट्रांसशिपमेंट हब. उनको रिप्लेस नहीं करेंगे, बट उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा ये ग्रेट निकोबार. दिस इज द आर्ग्यूमेंट. बट the writers say that port की जो कैपेसिटी है, यहाँ पर पोर्ट की कैपेसिटी विल बी डेवलप्ड कि आई एम मेकिंग द स्पेस, से फॉर एग्जांपल से 10 million cargoes to be here. Okay, now that is not the only factor which attracts the traffic. Okay, there are various other things required like network connectivity, cargo base, hinterland support. अब निकोबार में है, hinterland का क्या सपोर्ट है? if for example इसके लिए क्या चाहिए? मैन पावर. Okay, various logistical requirements, say urban centers near this, all these things will be missing. ऑपरेशनल एफिशिएंसी रिक्वायर होती है. अब ऐसा नहीं है कि जस्ट स्पेस क्रिएट हो गया, लो क्रिएट हो गया, उसके बाद everything becomes good. No, operational efficiency is required, career loyalty, all these things are required apart from the capacity. Second, geographic and structural limitation. Great Nicobar is 1200 km from the Indian mainland. Now how will you sustain these cost effective operations? वही मैन पावर वाली जो हमने डिस्कस किया, right? It will not have any hinterland, industrial base, urban market, okay, logistical infrastructure like warehouses, freight corridors, all these things. From where all these things will come? Third, unrealistic scale of expectation. देखो, कोलंबो अच्छा खासा पोर्ट है, जहां पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, वो अराउंड लेस देन 8 million ये TEUs होते हैं, यूनिट्स मेजर करते हैं 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट. बेसिकली स्टैंडर्ड मेजर है कंटेनर्स के लिए कि एक कंटेनर जो है एक कार उसमें शिप में उसकी कैपेसिटी कितनी है, 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट्स. वो अराउंड 8 मिलियन से कम ऑपरेट करता है, वो भी नहीं कर पाता. बट हमारा टारगेट क्या है? इससे भी डबल 16 मिलियन का हम करेंगे. दिस इज अनरियलिस्टिक. ओके, इट इज इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल गिवन इट्स आइसोलेशन एंड लैक ऑफ एग्जिस्टिंग कार्गो कमिटमेंट्स. ठीक है, तो अनरियलिस्टिक है. फोर्थ, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन. अब इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन तो हमने यहाँ से देख लिया. अब बोला जाता है कि इट विल इंश्योर इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी. पहली बात तो क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी जो इंडिया की स्ट्रेंथन होगी. क्यों? मेजर सिविलियन पोर्ट बन जाएगा, हमारी प्रेजेंस विल बी इंक्रीज नियर मलक्का स्ट्रेट. मलक्का स्ट्रेट से मेजर बेसिकली ग्लोबल शिपिंग जो चाइना भी जाता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनमें जाता है, तो इट विल बिकम दैट. बट इंडिया ऑलरेडी हैज अ नेवल बेस एट INS बाज. INS बाज है वहां पर उस रीजन में सर्वेलेंस के लिए. द आर्ग्यूमेंट इज इफ वी रिक्वायर इट फॉर मिलिट्री पर्पस, then why build a civilian port? Why it is being displayed as, economic justification has been given? What is the purpose? Is it strategic or economic? The main question is why commercial port is needed to serve a military objective, especially since China has not posed direct threat. उस रीजन में चाइना कोई डायरेक्ट थ्रेट हमारे लिए है भी नहीं. ठीक है, सो डिफेंस अगर पॉलिसी है तो इट शुड नॉट बी मार्क्ड एज ए कमर्शियल डेवलपमेंट. So these are the basic arguments have been given by the writers. In the past also, last month we have discussed 2 to 3 times this Nicobar project. In 1 or 2 articles we have discussed positives of the project. In 1 or 2 articles we have discussed negatives, the environmental and the impact on the indigenous population. Now this one more article is about the challenges or the issues in the development of a port in the Great Nicobar. Okay, so this is about this. Yes, last is Gyan Bharatam mission. ये बेसिकली क्या है? This mission was launched, it was announced in the budget for 25-26. The main purpose of this is to identify, then digitize, preserve and promote India's manuscripts. Manuscripts को identify करना है, फिर digitize, preserve and promote करना. This is the purpose of this. It comes under Ministry of Culture. In prelims, if a question comes, a statement can come Ministry of Culture, it comes under.
ओके उसके बाद एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी जहां पर ऑल दीज manuscripts will be digitally stored. अब there are like two kinds of institutions will be built. One is cluster center, second is independent center. क्लस्टर सेंटर क्या करता है, बेसिकली उसके खुद के जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं उसके साथ साथ वो पार्टनर्स के जो पार्टनर्स हैं उनकी स्क्रिप्ट को भी प्रिजर्व करेगा और डिजिटाइज करेगा, विच शुड नॉट एक्सीड मोर देन 20. और इंडिपेंडेंट क्या करेगा, अपने खुद की को जो है उनके लिए ऑल दीज थिंग्स विल बी एग्जीक्यूटेड. So this is about the Gyan Bharatam mission under Ministry of Culture. Okay, so this is it for today. I'll be attaching these notes in the description box. If you have any query, you can ask. I'll see you on Monday. Till then, good luck, goodbye. Thank you.